वेलकम टू द मार्केट व्यू पॉइंट। ये जो मार्केट व्यू पॉइंट का जो सेशन है, ये सेशन मैं कंडक्ट करता हूं ताकि आप लोग को समझ सके कि मार्केट में क्या हो रहा है, इससे काम कैसे करना है और आप लोग इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। सो वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मार्केट व्यू पॉइंट एंड what we are seeing right now is that the markets are able to hold on to the lower levels और इस lower level को hold करते हुए हम आगे काम कैसे करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कशन हमने किया था थोड़े हफ्ते पहले, अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट को कैसे समझना है एंड हाउ वी शुड कनेक्ट ऑल द डॉट्स दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट. Lot of positive things are also emerging while trying to decode the market sentiment. So we are going to discuss all these elements and put them together so that we can have a view of what we need to see in the week coming ahead. So it's going to be a perspective of market learning. It's going to be a perspective of how to read the various price elements, and we are going to see how we can take help of NeoTrader and find out what to select for the week coming ahead. So at the end of this session, I will also be discussing about some interesting perspectives. So stay tuned to the very end so that you can get an advantage of how to look at the markets at the end of every week. And you can repeat this process every time, and you'll find that you have a good learning and a good grip on the way the market is behaving. So let's get started with how the market is set out. And when you're going to talk about how the market is set out, we always have to remember that the market is not in a linear direction, right? So now we have been looking at the markets, we have been trying to understand what the market is trying to tell us, and we have been trying to understand what the market has in store for us. और जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट? So when we take a look at the market, we feel that the top is here, the top is here, and the bears are waiting to take us down, right? So this is the kind of sentiment which all of us go through, and that is why you will see that every bit of rise, right? In this week also, we had two sessions of sell-off at higher levels, and then people could not really participate there. And I would say that overall, the market has been able to hold on to the recovery. But then what is happening is that the people are not very positive about the market, and they are looking at the market with a lens of suspicion. Now, what we need to do is we need to see how to remove that lens of suspicion and put a lens of more optimism, because right now the need of the hour is optimism. Now how can we get optimism? Now we got some sense of optimism from the Israel and Hamas in the Hamas deal, right? Now what we need to see is the result season which is unfolding, can it give us some sense of optimism? और इसको बैकग्राउंड में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि मिड एंड स्मॉल कैप and even on the indices, can it translate into some positive cheer which all of us have been waiting for? बार बार ये positive cheer आता है और हम उसमें बहक जाते हैं, but we are not able to participate. So this time it's going to be a different ball game, and we need to see whether this festive season जो है, right? अभी festive season का माहौल है, दिवाली आ जाएगी एक हफ्ते में. How are we going to deal with the market? So let's go and take a look at that. All right. So we will break down the whole sequence into index analysis. Then we will get into the sector analysis. Then we will get into the stocks analysis so that it gives us a good perspective of how we should be looking at the market and how we should plan our trading journey. All right. Now, post that, I will also take up your questions. I'll answer all your questions so that you get a good perspective of how to look at the road ahead. So now first up, as you can see here, this is how the market panned out, right? And when you take a look at the markets, the sentiment has been positive, and even when it ended the last trading day of the week, the sentiment was positive, right? Barring certain profit booking in the metal slightly after a good run, the most of the other sectors were positive, and especially the advanced decline ratio, which is something which is very important for us to get a sense of where the market is
behaving, where the market is heading. So this gives us a good perspective of where to look at and how we should participate. And from this, it was very clear right from the word go. So the market has been able to retain the positive momentum, and that's what has been the drift for the entire week last week. Though there was some profit booking at higher levels, it the bears were not able to persist. So that was a good sign, and that helped Nifty to close at a reasonably good zone. Now, when you take a look at the indices, let's take a step back. Okay, let's go a bit into the history, and then let us see what has happened now. So let's do past and the current scenario. Okay, and let's find out what really we observed and what unfolded, and that's how we will be able to arrive at some kind of comparative analysis. So you can see here, this is how the Nifty was. Okay, like I always believe that Ichimoku gives a very good perspective. So Ichimoku के काफी interesting videos है हमारे, आपको समझ में आ जाएगा कि why we prefer Ichimoku, because Ichimoku is a one glance इंडिकेटर. यहाँ से आपको पता चलेगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, और इसे रख के आप आराम से पता कर सकते हैं कि इसमें होने वाला क्या है. तो यहाँ पर जो सिचुएशन था, ये था in the middle of September, where the prices had shown some intent. Okay, you can see here the intent was there. Now ये intention कैसे पता चला? Prices, they went above the cloud region. Okay, they closed above the cloud region. Now what has happened is that after this period, the prices were not really able to sustain, and you can see here that after this zone, so this was somewhere in the middle, and then prices went up, and then again it came back all the way. Okay, इसके बाद ये चला और आगे ये जब चला, you can see here that where I am placing my mouse right now, यहाँ से the move was not very sustained. But this time around, okay, now if you go here, you can see here, this is a very important zone. Past, present और future, ये तीनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है from Ichimoku. So यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है. Okay, so what does this mean? This means that the bullishness is there, but not so much. Okay, bullishness is there, but it's not so much. So now when that being the case, so you will have to treat it with a pinch of salt. So यहां पर क्या हो गया है, यहां पर आपको जिसको फ्यूचर क्लाउड बोलते हैं, तो ये फ्यूचर क्लाउड जो है ये पॉजिटिव बन गया है. सो व्हाट डज इट से? इट सेज दैट ये अभी जो रिकवरी है, दिस इज बेटर. ओके, दिस वन इज बेटर than this one. All right, this one is better than this one. So that is how you will get a perspective, you will get a picture of how the market is getting positioned. And now when you talk about the Chikou span, okay, this is the CS line, इसको Chikou span बोलते हैं, most sensitive part amongst the Ichimoku. वो भी हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक मूवमेंट आने वाली है, और अच्छी मूवमेंट आ चुकी है, यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है. So you can build up your hopes, right? This time also we're building up our hopes, correct? But then price, pattern, momentum, everything seems to be coming in place, and you can see here that again the RSI is tipped above 60. So overall the momentum is looking quite good. So I would say that if you're going to take a look here, then Nifty is definitely poised for some upside. All right, so that is the overall scenario which I'm getting from this Nifty chart. तो और भी देखते हैं, और भी गौर करते हैं, एंड फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा ओवरऑल सिचुएशन का. सो यहाँ पर मैंने एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ की है. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन हैपन. सो हियर आई हैव यूज्ड अ सिंपल ट्रेंड लाइन अप्रोच. So you can see here that this particular trend line which I have drawn, so this trend line is having a resistance zone around the 25,370 to 400. Okay, this is all on the Nifty spot, because I believe on the spot levels. So around the 25,370 to 400, वहां पर आपको एक resistance मिल सकता है. Right now it is at 285. ओके, सो यहाँ से 115 पॉइंट स्पॉट में जगह बन रहा है. सो यू कैन से 100 पॉइंट्स, 100 to 115 पॉइंट्स इज द ओपनिंग विच इज अवेलेबल. व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस हो रहा है. ओके, किसका? ये ट्रेंड लाइन का. ओके, दिस इज द ट्रेंड लाइन. ऑलराइट, सो दिस इज योर ट्रेंड लाइन and this is the median line. So this is a tool called as a pitchfork,
And I like to use this tool because it gives me a very clear idea about how the trends are getting divided. And this median line is a very powerful line which we have. So we have a course on Pitchfork. You can go and take a look at it on our training portal. We have got a course on Ichimoku by Dr. Narayan himself. There is a course on Pitchfork by me. So all these courses are designed to give you a good idea about how to use this tool, because we use this tool regularly in our analysis, and we take help of NeoTrader to come out with the right kind of trade. So right now you can see here that यहाँ से जो है ये एक important zone बन गया है. Right now you can see here the RSI is above 60. So overall, the prospects of the price going up is very much there. But where will it stop? 100 points from now. Okay. So one has to be careful when you are going into the market in the coming week, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पर एक थोड़ी रुकावट आ सकती है. So while we will get excited, it is also important to know कि आगे वाले अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो उसकी जानकारी ले ले. And that is why this weekend analysis which I do, I highlight to you all the good points, all the speed breakers, so that your journey is not as bumpy as most of the others who are not guided. All right, so that's the whole idea here of this weekend analysis. So now when you take a look at deepening the analysis, so that's where the entire stock analyzer comes into play. And you can see here that यहाँ पे जब आप निफ्टी का एनालिसिस करना चाहेंगे from the stock analyzer, so you can see that the bull score is at 35, which says that okay, a good set of bullish score has begun. Okay, a good set of bullish score has begun. So please take note. So this is the messaging which you are getting from Ichimoku. Okay. Now what you can see here in Ichimoku, you can see here that the current price is well above important resistance zone. So you can see with the TS and KS immediate term का जो resistance zones है, which is around the 24,960 to 25,000. This is also the option data, उस पे हम आएंगे. But यहाँ पर जो है इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? Okay, now we are saying that the indices are positive. So if indices are positive, and I'm looking only at 100 points here. So the next question will be, what will be the ideal dip buy scenario? So now when I can see here that almost at around 25,000. So you can see that multiple the Ichimoku levels are closer towards 25,000. So any pullback on the Nifty spot towards 25,000 to 25,050 would be a good zone to buy into. Okay, would be a good zone to buy into, because that is what is the entire scenario looking like. So if I were going to go into the next week, and if I'm going to look at a dip buy scenario, then I would wait for some pullback into these zones as a buying opportunity. Okay. So overall, you can see here that the market is favorably poised toward the upside. So that's the overall view on Nifty. Now, when I combine it with the option data, I can see here, like as you can very well see that the मैक्स पेन इज एट 25,300, यानी वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है पोजीशन का. तो 26,300 से लेके 26,400, तो यहां पर एक रुकावट आ सकती है. सो प्लीज नोट, बट देन लोअर लेवल्स अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, सो विच कैन अब्सॉर्ब the sell off here. So PCR is also above 1, which clearly says that the Nifty is poised for more upside. So one has to maintain the bullish view here till we reach a point of exhaustion. So अभी तक point of exhaustion पहुंचा है या नहीं? Answer is no. So we will continue to hold on and wait for those important levels to watch out for. So now when I take a look at the important supply and demand zones, so वहां पर चलेंगे, supply और demand zone देखेंगे for the Nifty and find out how can we take action on them. So first of all, when I take a look at the supply and demand zones, so what do I see here? I see that the overall setup जो है यहाँ पे, okay, so this is a no trade zone. Okay, this is a no trade zone, जैसे कि मैंने कहा है. तो 26,400, राइट, आई टोल्ड यू दैट दैट इज द कॉन्फ्लुएंस जोन. वहां पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां पर
आपको मीडियन लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर H3 लेवल भी आ रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है। तो अगर निफ्टी का आपका पोजीशन है तो आपको ये समझकर चलना चाहिए कि 26,400 पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पुल बैक लेवल टू बाय इनटू। सो लाइक आई सेड ऑन द स्पॉट 25,150 is a immediate first level of support, and then at 25,050. So I would look at those two levels as a dip buy zone to watch out for. As you can see here that अगर 25,050 के नीचे गया निफ्टी स्पॉट तो वहां पर थोड़ी तेजी के साथ आ सकती है, एंड एज यू कैन सी हियर वेरी वेल दैट दी L4 levels are around those levels. So उसके नीचे गया तो then you can see some acceleration in the decline. Till then it will continue to be a dip buy zone. वहां से अगर रिकवरी आती है so you can consider that as a buying opportunity, and 25,400 will be an important zone. Now the next is if it crosses 25,400, then door opens up all the way towards 25,700 and 25,978. So these are the other two levels which you can watch out for, क्योंकि यहां से जो दिख रहा है आपको, you can see here that these are the two important target zones which I'll be tracking in this coming month. Okay, तो ये of course next हफ्ते के लिए है, so 25,700 and 25,900 will be two important levels which we will track on the Nifty as a target if 25,400 is exceeded. But for 25,400 to exceed, we need to have some kind of positive news flows coming in, और उसके बाद ही ये लेवल्स चैलेंज होंगे। बट अभी के लिए हम लोग ये मानकर चलेंगे कि डिप पर बाय करेंगे। सो डिप पर बाय करना उचित है क्योंकि अच्छी खासी रेजिस्टेंस आ रही है और ये लेवल्स को हम लोग ट्रैक करेंगे और आगे वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि ये लेवल्स कैसे हमारे लिए मदद कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ हैविंग गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ निफ्टी, लेट अस गो एंड टेक अ लुक एट व्हाट लाइज इन स्टोर इन दी बैंक निफ्टी। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, सिमिलर टू लास्ट टाइम सिनेरियो। यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी में जो है, ओके, आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूं। ये जो भी इन इचिमोकू ना प्राइजेस अगर क्लाउड के ऊपर है तो उसका मतलब है कि प्राइजेस आर ऑन द बुलिश साइड। अगर प्राइजेस क्लाउड के नीचे है तो उसका मतलब है कि द प्राइजेस आर अंडर प्रेशर और ऑन द सेलिंग प्रेशर यहां पर ज्यादा है। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड, ये जो सेलिंग प्रेशर जो है ये स्लोली स्लोली कम होती गई। यू कैन सी हियर दैट यहां पर बाइंग आने लगा। ये ग्रीन कैंडल जो है ये बाइंग का सिनेरियो है, और यहां पर जब भी एक पुल बैक आता था वहां से एक रिकवरी होती थी, और ये रिकवरी करते करते यहां पर देखिए, यहां पर जो 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, यहां पर एक क्रॉस ओवर हुआ है। वो काफी दिनों से यहां पर वो नहीं हुआ था। प्राइजेस क्लाउड के ऊपर चले गए, राइट, और यहां पर क्रॉस ओवर भी हो गया है। सो यहां पर एक क्रॉस ओवर होने का मतलब क्या है कि ये अभी एक बुलिश सिनेरियो हमें दिखा रहा है। एंड यहां पर जब भी आप देखेंगे 56,000 के ऊपर जो है भाव चल रहे हैं तो उससे क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर आगे जाने की संभावना बढ़ गई है। तो यहां पर देखिए 56,000 के ऊपर कैसे छलांग लगाया, और उसके बाद यू कैन सी कंसोलिडेशन एट अराउंड दैट लेवल एंड देन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज एट द एंड ऑफ द वीक। सो व्हाट डज इट से, इट सेज दैट अगर आप देखेंगे कि एक सिंपल सा, अगर आप देखेंगे ये एक वैल्यू एरिया है, ये सारे एक वैल्यू एरिया रेजिस्टेंस जोन्स है। तो जहां पर भी मैंने टिक मारा है वो सब एक वैल्यू एरिया रेजिस्टेंस जोन्स है, और जब उसके आगे अच्छी कैंडल क्लोज हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैंक निफ्टी टू टेक लीड इन द कमिंग वीक बढ़ जाती है। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू फोकस योर अटेंशन हियर, एंड बैंक निफ्टी कुड बी a good play in the coming week. Now Nifty took some action here. Now Bank Nifty also could join the fray. Now compared to Nifty, you can see here the score is much lesser, right? But there is no bear score here, but the score is much lesser. However, when you take a look at the scores, यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है ये सिमिलर सिनेरियो है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो TS, KS और SSB ये सारे
अराउंड 500 से लेके 250, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन बन गया है। तो इफ देयर इज अ पुल बैक इन बैंक निफ्टी, सो दिस सपोर्ट जोन जो है, तो मैं आपको बैंड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो है ये सारे लेवल जो है इट विल स्टार्ट एक्टिंग अप एंड इट कैन हेल्प यू टू गेट अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ विच लेवल टू बाय इनटू, राइट। जैसे हम सबने देखा है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर मूव में अगर डिप बाय करते तो आपको ज्यादा फायदा होता, राइट। बट प्रॉब्लम यही है कि डिप बाय करना है बट कहाँ करना है पता नहीं। दैट्स वेयर न्यू ट्रेडर कम्स इनटू प्ले एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ जोन्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स टू ट्रैक, एंड देन when you combine that with the option data you will get a much better perspective. So you can see here, यहाँ पर भी जो PCR है it is at 1, okay, मैक्स पेन पॉइंट इज एट 56,200, और यहाँ पर जो ऊपर की जो संभावना है इट इज अप टिल 57,000 वेयर देयर इज सम बिट ऑफ कॉल राइटिंग। सो 56,000 ऑन द डाउन साइड, 57,000 ऑन द अप साइड, इसको हम लोग नजर रखते हुए आगे वाले हफ्ते में चलेंगे एंड वी विल सी हाउ टू लुक एट द मार्केट कंडीशन and decide the future course of action. So this is the situation on bank nifty. और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, राइट, दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच ऑल ऑफ अस हैव, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने कहा कि द ऑप्शन डेटा इज सजेस्टिंग 57,000 कुड बी अ इंपॉर्टेंट हर्डल ऑन द अपसाइड, सो वहां पर H3 आ गया, और नीचे L3 है एट 56,300। सो नाउ अगर ये टूट जाए, नेक्स्ट इज एट 56,000, सो 56,300, 56,000 ऑन द डाउन साइड, ऑन द अप साइड 57,000, 57,200। सो ये लेवल्स हमारे रहेंगे ऑन द सप्लाई साइड एंड ऑन द डिमांड साइड। सो इसको हम लोग मैप करेंगे और आने वाले सेशन में वी विल सी हाउ टू टेक अ ट्रेड। नाउ इफ द मार्केट इज एक्सट्रीमली बुलिश, so what we'll have to wait for, we'll have to wait for some trigger points. So let's see what are those trigger points here. So हमेशा हम मानते हैं कि अगर ट्रिगर आना है, अपवर्ड मोमेंट आना है तो H4 क्रॉस करना पड़ेगा, डाउनवर्ड मोमेंट आना है तो L4 क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पर 56,000 से लेकर 57,200, सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन, ओके। इसके आगे चलेगा तो आप इसको मल्टी डे अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं। सो नाउ गेटिंग इनटू द मार्केट फॉर द कमिंग वीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल if you are going to trade on a shorter time frame, so you should continue to see that the 57,000 is an important level to cross, okay. First step 57,000, considering that the scenario is bullish, let's talk of the upside. First level 57,000, it is in line with the option data, then 57,200, and then it opens up door to 57,700। तो यहां तक की बात करेंगे। आने वाले सेशन में जब भी हम वीकेंड एनालिसिस करेंगे तभी हम देखेंगे कि इस सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में क्या हुआ, कहां तक चली, कहां अटकी, क्यों अटकी, ये सारे चीजों पर हम गौर करेंगे और डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल ये लेवल्स आपको ट्रैक करने चाहिए ऑन द बैंक निफ्टी सो दैट यू गेट अ क्लियर पर्सपेक्टिव। सो व्हाट ऑल डिड वी डू नाउ, we saw the overall market perspective, right? Then we saw how the markets were at a earlier point in time and how is it now, and then we went about doing a systematic review of how it is placed in the option data. Then we saw in the stock analyzer how are the indices placed, both Nifty and Bank Nifty, and then we went down into the particular levels and define the supply and demand zone, so that when you're going to take any kind of trading action in the coming week, you will be able to decide and take the trade because you have the levels at your disposal, all right. So this was the index analysis। इंडेक्स के बारे में हमको समझ में आ गई, तो अभी चलिए हम लोग जाकर देखते हैं हाउ आर द सेक्टर्स। सो सेक्टर एनालिसिस करने के लिए इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इजी इन न्यू ट्रेडर। सो न्यू ट्रेडर में एक तो पहले बात है कि न्यू ट्रेडर में आपको डायरेक्टली सेक्टर का एनालिसिस मिल जाता है,
तो सेक्टर का आपको एक परव्यू मिल गया। तो यहाँ से आप जा सकते हैं और ये सारा सेक्टर्स आपको दिखाई देता है कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है पूरे हफ्ते पे एंड ऑन द डाउन साइड। सो नॉर्मली एज अ प्रैक्टिस आई टेक अ लुक एट द टॉप सेक्टर्स दैट आर परफॉर्म्ड during the week on the buy side and top two on the down side. So you can see here हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, यहाँ पर देखेंगे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है एंड इन मीडिया में थोड़ी बिकवाली ज्यादा है, बट बाकी सारे सेक्टर्स में एक पॉजिटिविटी है। सो नाउ वंस आई क्लिक ऑन दीज नेम्स on the sectors, I get those names, but we will go into the stock approach in a different way. Now when I take a look at the all the other indices, okay, the indices performance has been quite good, and you can see here that after a long time you can see some strong recovery in all the indices. Okay, mid cap से लेके small cap से लेके सारे इंडाइसेस, मेजर मेजर इंडाइसेस में 1% से ज्यादा बढ़ोतरी है। और ये एक ही बात आपसे कह रही है कि यहाँ पर थोड़ी बुलिशनेस आ गई है। As of the last few days, the FIs have been continuously buying in cash, so which says, and they are also reducing their shorts, so which is a clear support to the index up move. And we believe that this could continue if the positive news flows emerge. And looking at the way the market is flowing right now, we can see that the some positive tailwinds are once again emerging into IT and pharma, and that could help us to move into the next few days. All right. So now let us take a look at the stocks. Okay, let us take a look at the stocks and find out how can we decide on what kind of stocks to select. और उसके लिए हम लोग चलेंगे इनटू नियो ट्रेडर। राइट, सो नियो ट्रेडर के अंदर जाएंगे और नियो ट्रेडर की मदद से हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई गेट इनसाइड नियो ट्रेडर, सो यू कैन सी हियर वी हैव गॉट दिस एक्टिव स्टॉक सेक्शन, राइट। सो एक्टिव स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं और ये एक्टिव स्टॉक्स का एक ही मकसद है कि आपको जो चलने वाले स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स में एक्शन शुरू हो गई है ऑन द बुलिश साइड और ऑन द बेरिश साइड, वो स्टॉक्स आपके सामने लाकर रख दे। नाउ अभी आप सबके मन में ये सवाल होगा कि इतने सारे स्टॉक्स में से वो चुनिंदा स्टॉक्स कैसे चुने, राइट। उसके लिए मैं एट द एंड ऑफ द वीक I always believe that if you want to make money, then you need to have, if you're going to trade, right? If you're going to take a trade, then there are only two ways to trade. One is trade with momentum and trade with absence of momentum. Now, looking at the market condition, what is the thing that is running in your mind कि मार्केट में बहुत कुछ मूव हो रहा है लेकिन मुझे वो पकड़ में नहीं आ रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। Now, what we have done is we have got a special momentum tool here, which is called as ADX, Average Directional Index. So, Average Directional Index क्या है? Average Directional Index is a momentum indicator और वो आपको rate of change of prices वो आपको बताता है using the concept of directional change. Okay? So, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये जो है it is called as a ADX, Average Directional Index, and ADX denotes the strength. So based on the strength, based on the direction, we have designed a very powerful proprietary algorithm that says that okay, यहाँ पर, so that is called as power trend. So power trend is part of the ADX setup. और यहां से आपको पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स में बुलिशनेस आप कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में आप बेरिश कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको काम करना हो आपको इजी हो जाए। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी नाउ फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सेलेक्ट बुलिश एंड बेरिश स्टॉक्स, राइट। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट बुलिश एंड बेरिश स्टॉक्स। सो हमने कौन सा सेक्टर देखा, हमने आईटी सेक्टर देखा। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन गो हियर, ऑलराइट, एंड आई कैन गो एंड सेलेक्ट द आईटी सेक्टर। सो नाउ ऑन द आईटी सेक्टर आई विल सी on the daily which sector is bullish, which stock is bullish. Latent view is bullish on the daily. Okay, so let's list them down. All right, so
I will just note it down here. Now, what I'll do, this was the bullish stock and private bank was the other positive. First, we will go into the particular stocks, okay? And then, okay, let me put Bank Nifty. So I can see here that two private banks, and then we have the media, right? So we have the media on the bearish side. So I'm going to filter from here. I'm going to see if any media is there here. So I can see that there is no media out here. Okay, so there is no media out here. So I am not going to focus on the media. So media, I'm not going to focus on the media. So I am letting go on the media on the downside. So now what stocks do I have? I have got three stocks here. So as you can see, we have got Latent View, Kotak Bank, Federal Bank, and Happiest Mind on the downside. So this is a cash stock, so I will ignore it. So these are for long. Now what I'll do is I will now take help of the well said bullish. Okay. So now I've got these set of stocks here. So I have got well said bullish out here. And from the stock selected, is any stock matching here? I can see that latent view. Okay, you can see a latent view. So you can see here, latent view is here. Okay. So as you can see here, then there is Kotak Bank, which is matching. Federal Bank is also matching. So what has happened here? All the stocks from the well set bullish, these three stocks are there in the well set bullish. So if I want to go long, so first of all, I'm going from the sector. Then I'm selecting the stocks which are part of the power trend. So now as I go into the next week, I got one stock from the cash segment and two stocks from the banking for the long. Okay, like we discussed, Bank Nifty is coming up. Bank Nifty is showing some promise, and with the kind of positioning which we are seeing right now, so we can definitely say that we had shortlisted the stocks, and now after shortlisting these stocks, you can see that these candidates are also part of the well set bullish camp. So automatically the stocks have got qualified, and I am ready to go with them for the coming trading session. All right. Now this is for the coming trading session. Now a day, a well set bullish and a power trend bullish, which has come on the day, it is not going to disappear overnight. Okay. Please note that it is not going to disappear overnight, because in this ADX and DMI trends which have been calculated by NeoTrader, the trends take time to appear and it does not go away in a hurry. So if it has come here, then probability of the trend to stay is very much there. So one should continue to have that bias of positivity and hold on to this stock. All right. So as discussed, we have shortlisted three stocks: Latent View, Kotak Bank, and Federal Bank. So these are the three stocks which you can note for the coming week as a positive based on the steps. So we took a look at the market, we studied the indices, then we studied the sector, and then based on the sector performance, then again we went down into the stock selection criteria right from the sector and also based on the well set bullish. So well set bullish, these stocks have been identified on the bullish side. The same way you select well set bearish, and you will see that these are some stocks which are on the, so these are cash stocks, right? These are cash stocks. So cash stock shorting, I leave it up to you, but I prefer, if you want to go short, then it is better to go short in the future segment, because that way you can carry it in a short equity market. If you go short, then you have to necessarily cut it at the end of the day, because even if you are wanting to carry and if the trends are there, but if it is not persisting, then there is no point in going short there. All right. Thank you so much. Have a good day. I'll connect with you later. Bye and see you.